Hi friends, welcome to my channel. In this session of the video, we will discuss about conditional sentences or conditional clauses or sequence of tenses. In the earlier classes, we have already discussed about tense. Now we will discuss how tense can be arranged in a proper sequence. If we want to speak and write English correctly, we should know the arrangement of tense in a proper sequence. If we can't arrange the tense in a proper sequence, we can never speak English correctly in our life. So, we should know what is the sequence of tense. The sequence of tense is a system by which the tense of the verb in a subordinate clause is governed by the tense of the verb in the principal clause. In order to understand this principle, grammar prescribes certain rules. These are: Rule 1. A present or future tense in the principal clause may be followed by any tense in the subordinate clause required by the sentence. Principal clause रे जदि present tense किंबा future tense रही थाए तेबे subordinate clause रे जे कौनसी tense आमे यूज करि परिबा. For example, he says that Radha sings a song. Here he says, the principal clause, which is in present tense, that Radha sings a song is the subordinate clause, which is also in present tense. Principal clause is independent. It has its own meaning, but the subordinate clause depends on the principal clause to express its meaning. He says, से कहे, यह एक कंप्लीट सेंस देउछि, तेणु यह प्रिंसिपल क्लॉज अटे. दैट राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा गीत गाए जे, यह एक कंप्लीट सेंस देई पारु नाही, तेणु यह को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाए. जदि आमे कंबाइनली कहिबा ही सेज दैट राधा सिंग्स ए सॉन्ग, से कहे जे राधा गीत गाए, यह एक कंप्लीट सेंस देउछि, तेणु एठारे आमे जानिले जे सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग. सेहीपरि ही सेज दैट शी पास्ड द एग्जामिनेशन, एठारे ही सेज इज इन प्रेजेंट टेंस, शी पास्ड द एग्जामिनेशन इज इन पास्ट टेंस. जेपरि ही सेज दैट she will come tomorrow. Here also he says is in present tense and she will come tomorrow is in future tense. In the above examples, we saw that the principal clause is in present tense, where the subordinate clause takes any tense as per the requirement of the sentence. Similarly, if the principal clause is in future tense, the subordinate clause will take any tense required by the sentence. For example, you will say that he is a good student. You will say is in future tense, he is a good student is in present tense. I shall say that you will need my help, and she will say that Meera sang a song. Here, you will need my help is in future tense and Meera sang a song is in past tense. Next, we will see the rule number 2. A past tense in the principal clause must be followed by a past tense in the subordinate clause. जदि principal clause past tense रे थाए, subordinate clause past tense रे रहिबा नित्यांत आवश्यक. For example, my father assured me that he would buy a bike for me. Here, my father assured me is in past tense
and he would buy a bike for me is also in the past tense. Similarly, he failed because he did not work hard. Here, he failed is in past tense. He did not work hard is also in past tense. I knew that he would deceive me. He hinted that he wanted money. He told me that he was going to office. Here, from the above examples, we are clear that when the principal clause is in past tense, the subordinate clause should be in past tense. There are some exceptions also, such as exception number 1. A past tense in the principal clause may be followed by a present tense in the subordinate clause when the subordinate clause expresses a universal truth, mathematical calculations, historical fact, moral guidelines, habitual fact, or something that has not changed. प्रिंसिपल क्लॉज रे पास्ट टेंस थाई सबऑर्डिनेट क्लॉज रे प्रेजेंट टेंस रही पारिबो जेतेबेले सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से एक यूनिवर्सल ट्रुथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हिस्टोरिकल फैक्ट, मोरल गाइडलाइन, हैबिचुअल फैक्ट किंबा कौन सी अपरिवर्तनीय घटना को एक्सप्रेस करुथिबो. For example, the teacher said that the earth revolves round the sun. The teacher said is in past tense, but the earth revolves round the sun is in present tense. Because the earth revolves round the sun is a scientific truth. It can never be changed. Similarly, they said that health is wealth. Father said that Gandhiji is the father of nation. She said that water boils at 100 degrees Celsius. We believed that Kalidasa is the king of poets. Exception number 2. If the subordinate clause is introduced by a conjunction of comparison such as than, as well as, etc. In such a case, a past tense in the principal clause may be followed by any tense in the subordinate clause as per the sense of the statement. जदि subordinate clause रे such as than एवं as well as व्यवहार होई थाए सही क्षेत्र रे प्रिंसिपल क्लॉज रे पास्ट टेंस थाई मध्य सबऑर्डिनेट क्लॉज ता निजर स्टेटमेंट रो सेंस अनुसार टेंस ग्रहण करि परिबो. फॉर एग्जांपल, ही लव्ड मी मोर देन ही लव्ड यू. ही लव्ड मी मोर देन ही लव्स यू. ही लव्ड मी मोर देन ही विल लव यू. Here the principal clause is in past tense. Since the conjunction than is used, the subordinate clause takes any form of tense. Exception number 3. If the subordinate clause is an adjective clause, in that case it may be in any tense even if the principal clause is in past tense. जदि सबऑर्डिनेट क्लॉज गोटे एडजेक्टिव क्लॉज होई थाए सही क्षेत्र रे प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस रे थिले मध्य सबऑर्डिनेट क्लॉज जे कोनसी टेंस ग्रहण करि परिबो. फॉर एग्जांपल, आई विजिटेड द प्लेस व्हेयर द एक्सीडेंट अकर्ड. हियर द सबऑर्डिनेट क्लॉज the place where the accident occurred is an adjective clause. Similarly, I visited the village where he lives.
and I visited the hotel where he will stay. We will see rule number 3. If the subordinate clause is introduced by as if or as though, past tense is used for the present time and past perfect tense for the past time. For example, he talks as if he were mad. In this sentence, the subordinate clause has been introduced by as if and the tense is present. Hence, past tense has been used. We will take another example. He loved me as though I had been his son. In this sentence, the subordinate clause has been introduced by as though and the tense is past. Hence, past perfect tense has been used. Here we will see some examples like he looks as if he is ill. यार अर्थ से एपरी देखा जाउछि जेपरिकी असुस्थ अछि. यार अर्थ से प्रकृत रे असुस्थ अछि एवं असुस्थ थिबा परि देखा जाउछि. He looked as if he was ill. से असुस्थ थिबा परि देखा जाउथिला. यार अर्थ से प्रकृत रे असुस्थ थिला एवं असुस्थ देखा जाउथिला. मात्र आमे जेतेबेले कहिबा he looked as if he were ill or he looks as if he were ill. एहार अर्थ से असुस्थ नथिला मात्र से असुस्थ थिबा परि देखा जाउथिला. एहा एक काल्पनिक. से प्रकृत रे असुस्थ नथिला किंतु से असुस्थ थिबा परि देखा जाउथिला. Rule number 4. If a subordinate clause is introduced by conjunction lest, it is followed by should. जदि subordinate clause रे lest व्यवहार होई थाए तेबे यह सबु बेले should रो व्यवहार नहीं थाए. For example, work hard lest you should fail. कठिन परिश्रम करो काले तुम्हें फेल होई जीवो. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ लेस्ट यू शुड फॉल इल. तुम स्वास्थ्यर जत्न नियो काले असुस्थ होई पड़िवो. वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल. कैरी एन अम्ब्रेला व्हाइल गोइंग आउटसाइड लेस्ट इट शुड रेन. राइट डाउन दिस लेस्ट यू शुड फॉरगेट. काले भूलीजीव एहाकू लेखि पकाओ. लेस्ट ऑलवेज गिव्स ए नेगेटिव सेंस. हेंस नॉट should not be used in such sentences. For example, it will be wrong to say that walk slowly lest you should fall. You should not fall. धीरे धीरे चल काले तुम्हें पड़ी न जीव. तेणु आमे देखिले एठारे नॉट रो व्यवहार आवश्यकता नहीं. सो इट इज रॉन्ग टू से वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल. रादर इट विल बी करेक्ट टू से वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल. लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड whatever be the tense of the verb in the principal clause. For example, he took exercise lest he should fall ill. Here, he took exercise is in the past tense, the principal clause. He will take exercise lest he should fall ill. He will take exercise is the principal clause which is in future tense. We will see rule number 5. If we think of two actions taking place in future, one after the other, the principal clause is in future indefinite as the subordinate clause
is in the present indefinite tense. जदि आमे भविष्यतरे दुईटी घटना गोटिक परे गोटिए घटिबार भावी थाउ प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनाइट रे एवं सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस रे व्यवहार करि थाउ. फॉर एग्जांपल, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू प्ले. जदि वर्षा हेब मु खेलिबाकू जिबि नाही. एई दुईटी जाक घटना भविष्यत रे घटिबो बोली आमे भाबुअछु. सही क्षेत्र रे इफ क्लॉज बा सबऑर्डिनेट क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट रे एक्सप्रेस करी मेन प्रिंसिपल क्लॉज बा मेन क्लॉज को आमे फ्यूचर इंडेफिनाइट रे एक्सप्रेस करि थाउ. सिमिलरली, इफ यू वर्क हार्ड you will pass, and if you come I will go with you. Rule number 6. If two actions are shown happening in the past, one after the other, the principal clause is in the past perfect and the subordinate clause is in the past indefinite tense. जदि अतीतरे दुईटी घटना गोटिक परे गोटिए घटी थाए, प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस रे एवं सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट इंडेफिनाइट टेंस रे प्रकाश करा जाए. फॉर एग्जांपल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. डाक्तर पहुँचवा पूर्वरु रोगीटी मरी जाइथिला. एठारे दुईटी जाक घटना अतीतरे घटिथिला. रोगीटी मरी जाइथिला, डाक्तर पहुँचीथिले. एठारे आमे जदि देखिबा, रोगीटी प्रथमे मरी जाइथिला एवं तापरे डाक्तर आसी पहुँचीथिले. रोगीटी प्रथमे मरी जाइथिबारु एहाकू पास्ट परफेक्ट टेंस रे एक्सप्रेस करिअछे एवं तापरे डाक्तर आसी पहुँचीथिले. तेणु ताहाकू पास्ट सिंपल टेंस रे आमे प्रकाश करिअछे. तेणु जदि दुईटी घटना अतीतरे घटी थाए, प्रथम घटनाटी घटिथिबारु किंबा प्रथमे घटिथिबा घटना को आमे पास्ट परफेक्ट टेंस रे एक्सप्रेस करि थाउ एवं द्वितीय रे घटिथिबा घटनाटी को आमे सिंपल पास्ट रे एक्सप्रेस करि थाउ. सिमिलरली, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन. आमे स्टेशन रे पहुँचवा पूर्वरु ट्रेन टी चली जाइथिला. एठारे ट्रेन प्रथमे छाड़ी देथिला एवं आमे तापरे पहुँचीथिलु. सेहीपरि, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क व्हेन ही कॉल्ड ऑन मी. से जेतेबेले मते देखा कले मु मोर काम शेष करि देइथिली. मोर काम करिबा शेष हो जाइथिला, तापरे से मते देखा करिथिले. Rule number 7. If there are two actions in the past, the principal action should be in future perfect and the subordinate action should be in the past perfect. जदि दुईटी घटना अतीतरे घटी थाए, प्रिंसिपल एक्शन को आमे फ्यूचर परफेक्ट टेंस रे एक्सप्रेस करि थाउ एवं सबऑर्डिनेट एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस रे एक्सप्रेस करि थाउ. फॉर एग्जांपल, if you had been to Kolkata, I would have also gone. किंबा had you been to Kolkata, I would have also gone. एहार अर्थ, तुमे जदि कोलकाता जाई थांत मु मध्य जाई थांती. एही दुईटी जाक सेंटेंस रु एहा सूचाउ अछि जे एहा पूर्वरु केबे घटी नथिला कि आगकू केबे घटिबार चांस मध्य नाही. सिमिलरली, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, और हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट. तुमे जदि कठिन परिश्रम करिथांत तुमे पास करि जाइथांत. एथिरु एहा सूचित हेउछि जे एही दुईटी घटना पूर्वे केबे घटी नथिला कि आगकू मध्य घटिबार चांस नाही. तुमे जदि कठिन परिश्रम करिथांत
तुमे पास करिथांत। यार अर्थ तुमे कठिन परिश्रम करिना कि तुमे पास करिना। Similarly, if he had money, he would or could have bought a car. यार अर्थ जदि टंका थांता से गोटे कार किनी थांता, तार टंका नहीं कि से कार किनी नहीं। If the police had arrived in time, the child would have been saved. जदि पुलिस ठीक समय पहुँची थांता पिलाटी रक्षा पाई जाई थांता। यार अर्थ पुलिस ठीक समय पहुँची नथिला कि पिलाटी रक्षा पाई नथिला। Rule number 8. When two actions are to take place on some future time, we use future perfect for the action completed first and present simple for the action to be completed afterwards. जदि भविष्यत रे दुईटी घटना घटिबो प्रथमे घटिथिबा घटनाटी पाई आमे फ्यूचर परफेक्ट टेंस एवं परे घटुथिबा घटनाटी पाई सिंपल प्रेजेंट टेंस व्यवहार करिथाउ। फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कम्स। सिमिलरली, द प्रिंसिपल विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच देयर। शिक्षक आसिबा पूर्वरु पिला माने क्लास छाड़ी पळेई जाइथिबे। मु सेठारे पहुँचवा पूर्वरु प्रिंसिपल आरंभ करि देइथिबे। So this is all about sequence of tense. This ends today's session. Thank you all.